Hi, I'm Nitin Jain. I was at IIT Delhi from 2003 to 2008. My entry roll number was 2003 CS 50218. I was in Nilgiri Hostel in the computer science department. This used to be our favorite place. एंड ऐसे ही बैठे थे यहाँ पे आप Yeah, absolutely. एकदम कुछ फ्लैशबैक आ रहे हैं ना ऐसे पीछे 100%. I remember all the moments. Yeah. You know, walking out here. वहाँ पे drama practices होती थी. नुक्कड़ नाटक एंड ऑल दैट Not that I participated in any one of them, but I used to watch over there. There used to be a lot of activity going on around Rendezvous over Right. here, including Trist. Trist के अंदर भी काफी activity होती थी. Hmm. So I participated a lot in Trist. Hmm. So that excited me quite a bit. I held a few competitions, won a few competitions. So that was more exciting than Rendezvous. The fondest memory of Rendezvous, I guess, was when I accompanied KK, the singer, and got him here, got him to his hotel, and then brought him here, and then we kind of organized the entire Wonderful. show. That Excellent. was quite fun. And KK was a very sweet person. He Yeah, was he was. actually from my school Yes. in Delhi. It was very unfortunate to lose Very him. unfortunate, yeah, and very talented and such a humble and such, Such a a beautiful humble person. and down to earth guy. Yeah, that was Yeah. one of my fondest memories. Fondest memories. Of Rendezvous. And so, give me a little bit of an insight to how an ordinary day of an IITian, of you basically, was. Ordinary day तो ऐसा था कि यार सुबह 8 बजे लेक्चर होता था हमारा. और सारे लेक्चर पे जाते थे आपने? I was Yeah. actually, so I hardly missed any lectures. So that was one thing that ऐसे नहीं आता है सिल्वर मेडल, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं, ऐसी लेक्चर बात जाने नहीं पड़ते है. हैं. हाँ. But हर लेक्चर में जाता था. I think that was one thing that all of us, in fact not only me, I don't think anyone had less than Right. 95% or 99% Wow. attendance out of all my peers, right? So no one really missed, Classes. especially in computer science. Right. No one missed any kind of classes. So it used to be that. Then during the day, and then you go back, have your food at 12 o'clock. You know, when lectures नहीं होते बीच में जाके सो जाओ थोड़ी देर. हाँ. So we used to go back and sleep for a little while, and then wake up and continue during the day. In the evening, we used to play about an hour of cricket Excellent. between 6 and 7 Right. in the ground opposite Shiva, Shivalik. And then after dinner, then projects वगैरह होते थे. पूरी रात हम बैठे रहते थे. Right. That used to be really fun. Right. कंप्यूटर के सामने 2-3 जने बैठे हुए हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे Right. हैं थ्रू आउट द नाइट, एंड देन वी यूज्ड टू स्लीप एट 4 o'clock in the night. 1 बजे लेकिन चक्कर काटने यहाँ पे आता था. 1 बजे कभी कभी चाय पीने, चक्कर काटने. यहाँ पे एक छोटा सा नेस्कैफे होता था वहाँ पे, Right. आउटसाइड रीडिंग रूम. Yeah. So we used to be here, we used to be near a hostel, and then बस. एंड वहाँ पे हम इलीगली बाइक भी रखते थे जब अलाउड नहीं थी. छुपा के रखते थे. कभी तक्षशिला में रख रहे हैं दोस्त के घर पे, कभी इधर रख रहे हैं, कभी उधर रख रहे हैं. 1-2 बारी लॉक भी हो चुकी है, पैसे भी नहीं हैं उसके लिए. आई होप आई कैन सी ऑल ऑफ दिस. कोई नहीं, इसको एडिट कर I देंगे, think नहीं बोला जाए. वो होता है ना कि स्टैट्यू क्या होता है वो कि स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस होता है जहाँ पे एक टाइम पीरियड पास हो जाता है. Right. Applies. I think that's there. But And what about your weekends? weekends कपड़े धुलवाने घर जाता था. But later on, in the 3rd, 4th year, we used to spend a lot of weekends here. Right. फर्स्ट ईयर में थोड़ा सैटरडे संडे घर जाते थे, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कम हो गया था. 3rd, 4th ईयर ऑनवर्ड्स और कम हो गया था, बिकॉज वी यूज्ड टू हैव सिंगल रूम्स. अर्लियर देयर यूज्ड टू बी अ ट्रिपल शेयरिंग रूम, Right. सो दैट यूज्ड टू बी अ बिट डिफिकल्ट. बट Right. सेकेंड ईयर में डबल शेयरिंग, 3rd ईयर ऑनवर्ड्स सिंगल रूम्स, सो दैट यूज्ड टू बी रियली फन. So you really waited कि कब मेरा तीसरा साल आएगा यहाँ हाँ, पे, exactly. And then you have all the privacy in the world, and then you used to stay there only कि कब जाना है, कब बाहर आना है हॉस्टल रूम से. Then no one was stopping you. That was quite good. Excellent. Sounds really nice. Sounds very much like how college life should Yeah, be also. it should be. Yeah. You work hard and and you play hard. I recommend everyone to go through the hostel life. Right. Yes. It's a different feeling It altogether. is, and you get used to a lot of things. Yeah. Yeah, and the food, etc. So you sort of, even in the company that we are building right now, so we are very frugal, Right. right? So we don't. That's why we're profitable as well, I guess. One of the reasons why we're profitable. So हम कहीं इधर फालतू खर्चा नहीं करते, and then Right. all of us are very very simple.
And that's what hostel life actually taught me. Right. How to live frugally, how to Right. live simply. Right. कि फालतू में खर्चा नहीं करना है and so on and so forth. I think that's what you learn in hostel life. Yeah. Excellent. ठीक है, cool. I see. हमारे टाइम पे ऑनलाइन आते थे, वी यूज्ड टू वेट. हम F5 दबा के रिफ्रेश कर रहे हैं या F4 होता था, जो भी होता था, रिफ्रेश कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, A ग्रेड आ रहा है, किसी का A माइनस आ रहा है या किसी का B आ रहा है. सो वी यूज्ड टू जस्ट वेट फॉर दोस रिजल्ट्स टू कम इन. जब प्रोफेसर्स ग्रेड्स वगैरह अपलोड करते थे, Right. यू नो, अभी भी मेरे को बहुत सारे नाइटमेयर्स आते हैं. सो मैं पूछने वाला था. मैं अभी भी आते हैं कॉलेज टाइम पे. एंड देन यू नो रात को सोते हुए कि यार सडनली आई एम लाइक यार एमटेक प्रोजेक्ट या बीटेक प्रोजेक्ट में ये सब करना है, तो मैंने किया ही नहीं है. और सुबह उठ के इतनी जान में जान आती है कि यार आई डोंट हैव टू डू इट एंड आई एम अ ग्रेजुएट नाउ, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ऑनेस्ट टू गॉड, एक महीने में एक बार ही तो आता है मेरे को नाइटमेयर. नाइट टेरर से उठ के फिर देन यू आर फाइनली लाइक ओह थैंक गॉड, निकल चुका है वो वाला टाइम. थैंक गॉड. वापस नहीं करना पड़ेगा ये सब हमको. नहीं, वापस नहीं करना पड़ेगा. नाइटमेयर आता है कि यार 2 दिन में सबमिट करना है, कुछ किया ही नहीं है. सो या सो दोज नाइटमेयर स्टिल कम. एक्सीलेंट. हमको भी थोड़ा बीच में अभी भी लगता है ना, एंग्जाइटी होती है कौन से मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे वैसे, बट फिर भी लगता ही है थोड़ा. सो दैट्स एंड ऑल्सो नितिन, आई एम श्योर the friends you made during your hostel time, during Yeah. your college time, We still speak to they're each other still, like right? once a week. And I've heard because this IIT Delhi Bond is very network strong. and the bond is like I think we are very strong. one of the colleges or one of the IITs जिसका alumni network and just the general bonding is extremely strong. Right. So you're still a part of that community. Yes. And you'll always be. Yes, absolutely. Yeah. Now it's a bigger IIT community, I guess. But वो जो IIT Delhi वाला जो अंदर से Right. जुनून आता है वो अलग ही होता है. Right. Also, one thing I wanted to ask Nitin was, what do you think the alumni of IIT Delhi can do, you know, to give back, to create more impact within the campus? At Honest IIT God, Delhi? I think it's not only about the money, right? Money Yeah. is one aspect of it. I think Right. they should be spending a lot of time with the students over here. हमारे टाइम पे बहुत कम होता था जब alumni आके हमें कुछ सिखाते थे, कुछ बताते थे. बहुत कम होता था. I think they should do, and the college should also approach the alumni to come back Right. and just teach the students and explain to the students what all is out there. Right. And they should be from every facet, not only business but also tech and maybe core engineering. Right. Those who have done well, why can't they come and have a round table with select few students? You don't Right. have to do it with the entire batch because then it loses the purpose. But जैसे हम startup founders होते हैं, हाँ. तो एक you know there's a small networking which happens and then you get to learn from what the other guy is doing, what we can do better Right. in our business, learn from them. Right. So अगर किसी ने अपने business में कुछ किया है, they've scaled up an app using some techniques, we learn from them and then Yeah. we tell them that what have we done to scale up. Right. So, you know, exchange notes. So similarly, you can get founders over here, just have a round table with some of the Right. students. Right. And then just give them your experiences, learn from their experiences, what are they working on, because they're obviously going to be working on great ideas, right? Yeah. So nice to see you. कैसा है भाई? करना वॉइस बॉट वगैरह बना लिया हमने. सो वी आर सॉर्ट ऑफ हैविंग अ कन्वर्सेशनल, पूरा हमने बना लिया जेन एआई कन्वर्सेशन. सो इट्स क्वाइट लाइक तो अब हम वीडियो की तरफ जा रहे हैं एंड देन वी आर डूइंग समथिंग देयर. सो आई हैव अ गाय. ये अभी भी सेम है. देयर इज नो चेंज. हमारे टाइम पे भी यही था, अभी भी सेम है. यहाँ हम फोटोशॉप कराते थे सारे नोट्स. एक अभी हट गया, अभी इस हट side गया. पे दुकान थी. देयर यूज्ड टू बी अ दुकान, छोटी सी दुकान यार. दिस Right. वाज द कॉमन रूम. Yeah. यहाँ पे टीवी शीवी था. अभी तो टेबल लगा दी. पहले तो सिर्फ यहाँ पे कारपेट होता था. And नीचे बैठ के टीवी देखते थे हम. जो भी क्रिकेट मैच वगैरह आता था ना,
लंच के टाइम एंड जब फोन वगैरह आते थे तो अनाउंसमेंट होके आपको फोन बुलाया होके जाता था? यहाँ पे है ना? फोन बूथ था, आई रिमेम्बर, इधर फोन बूथ था. राइट. पीसीओ वगैरह का सिस्टम था उस Yes, टाइम and तो. the mess used to be there. I think it's still there. This used to be the gaming room, etc., Right. etc. यहाँ पे एक छोटी सी, okay, that's very good. There's a nice shop. बच्चे मेहनत करके. Mess room. ये तो पूरा open होता था. यहाँ पे कैरम बोर्ड लगा होता था. I still Oh. remember. There used to be a TT table over there. Yeah, mess is exactly almost the same. Exactly the same. There is no change in the mess, except for the fact that we got an AC here, Now. हाँ. Yeah. which did not exist. यहाँ पे हमारा सोशल होता था. There should be a concept called social. Where अभी भी इधर ही होता है. girls DU कॉलेज से आती थी and then we used to Oh. mingle. हाँ. तब होती थी 100% अटेंडेंस. 110%. 95 और भी लोग आ बहुत कम जाते होती थे. इधर उधर हॉस्टल के भी आ जाते थे. Nitin, back to your hostel. I think it's been 16 years. 16 years. 16 years after you've graduated. Since Yeah. you've graduated, Yeah. back to your hostel. Yeah. कुछ बताओ hostel की कुछ memories, some Yeah, conspiracy, something, some insider information. या सो हमारा जो होता था, दो बड़ी मिन्नत के बाद दो उन्होंने वाटर टैंक्स लगवाए थे अंदर, ठीक है, जो जिसमें पानी भर सकते हो, बिकॉज यू नो फर्स्ट फ्लोर वाले ग्राउंड फ्लोर पे आके पानी भर के लेके जाते थे. तो सडनली व्हाट हैपेंड इज दैट द वार्डन केम एंड देन ही सेड टैंक को खाली करो फर्स्ट फ्लोर वाले को. उसमें बियर की बोतलें ठंडी होती हुई wow. मिली एंड देन इमीडिएटली डिसमेंटल्ड इसे, सब नीचे भरोगे पानी. तो लोग ठंडी अपनी पानी की बोतलें बियर की बोतलें कर रहे होते थे एंड दैट वाज वन ऑफ द मेमोरीज. आई डिडंट ड्रिंक एंड बट आई रिमेंबर दिस वेरी clearly. ये सब होता था and then there used to be a lot of cons happening Yeah. in the hostel, and then warden used to come at 1 o'clock in the night. I think our warden was Professor Mamedala, who's now the JNU, I think, vice chancellor or something like that. So a lot of fun memories that happened in the hostel, and that's where your growth begins. Yeah, wonderful. And what about like some water fights or something like that? होली के टाइम पे होली festivals के टाइम पे वगैरह. तो सब दरवाजा बंद करके बैठ है ना? जाते थे. कोई And आ ना जाए गलती से. क्योंकि अगर होली हो जाती थी हॉस्टल में एंड अब तुम पकड़े गए तो फिर 1 साल तक रंग नहीं उतरेगा, अगले जब होली जाके रंग उतरेगा. या सिर्फ कलर से खेलते थे और कुछ भी यूज होता था. इट वाज है ना? क्रेजी. Everything was क्रेजी. सो मैं mixture. तो 2 दिन पहले घर चले जाता था, घर से अप एंड डाउन करता था. Excellent. Yeah. And so we just took a round of the hostel. We saw your room where you used to stay as well. Yeah. Feels good, yeah. Feels Yeah, very it does. nostalgic. It does. Do you feel like back to your 18-year-old, It is 19-year-old actually, it self hasn't again? changed much, to be very honest with you. Right. It's exactly the same. So कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि यार बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है कुछ हॉस्टल के अंदर, या फिर the way it's just being run at the moment. Because ऐसा चेंज सा नहीं लग रहा है. It feels exactly the same. Yeah, you transform into your younger self again, yeah, when you walk Yeah. these halls. Absolutely. I saw Nitin, I heard Nitin just saying that the smell is the similar. Exactly the same. And these Look, senses like really take you back, Yeah, I think, to they your do. own time as They well. do. We also met your couple of your colleagues and your professors. Yeah. How was that connecting with them again? That was amazing. One of my classmates is now a professor in the computer science department, Rohan Paul. So it was amazing, just meeting him. It was unbelievable. And yeah, I met Professor Bakchi, who taught us a lot of subjects. Right. So that was also, it just brought back a lot of memories Yeah. and just made me a little emotional. I can It was quite good. I can feel that right now. You're Yeah. getting a little emotional Yeah, and it was nostalgic. And quite amazing. again, thank you so much, No, Nitin, thank you. for doing this with us. Thank you. It was such a pleasure. Thank you, And Shaurya. so good connecting with you, and really good to Likewise. see the insights of how the hostel life is, how the Yeah. campus life is from an alumni like yourself. Thank you. So thank you so much for doing Thank you, this. Shaurya. Thank and you, everyone. we shall see you again soon. Absolutely. Back to Look the forward campus, to yeah. being back amongst the students. Sure. Thank you so much. Thank Thanks you. a lot.